वर्षस्य अद्य समापनसमारोहे उपस्थिताः स्मः। तत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतम्। अस्माभिः सह विराजमानाः सन्ति अस्य राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः, प्रशासनकुशलाः, कमाण्डर् चल्ला वेङ्कटेश्वर महोदयाः। तान् अहं मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थयामि। तथैव अस्य वुमन् पख्वाडा कार्यक्रमस्य संयोजिकाः सन्ति आङ्ग्लविभागस्य अध्यक्षाः डॉक्टर दीप्ता महोदयाः। ताः अपि सम्प्रार्थ्यन्ते कृपया मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। अस्माकं सर्वेषामपि अनुभवसिद्धमिदं यत् सप्ताहद्वयात् अस्माभिः नैकविधस्पर्धाः आचरिताः। तत्र भवत्सु बहवः भागं गृहीतवन्तः। तत्र नैकाः न्यायनिर्णायकाः समागताः, नैकविधकलाकौशलानि प्रकटितानि। अतः तस्य सर्वस्यापि अद्य अन्तिमदिनत्वेन समारोहत्वेन अद्य अस्माभिः आचर्यते। तत्र अस्माभिः सह उपस्थिताः सन्ति अस्य राष्ट्रीयसंस्कृत सहकारेण एतेषां सह सप्ताहद्वयं यावत् अस्याः वुमन् पख्वाडायाः कार्यक्रमाः निरन्तरतया अनर्गलेन अस्माभिः सम्पादितम् इति उद्घोषयामि। तथैव अस्य कार्यक्रमस्य संयोजिका अस्ति अस्माकम् आचार्या डॉक्टर दीप्ता महोदया। एतासां दर्शने वयम् आवां द्वे अपि अहम् एवं साहित्यविभागस्य सहायक अध्यापिका डॉक्टर बुल्टी महोदया। आवयोः द्वयोः कृते अपि मार्गदर्शनं कृतवतीभ्यः डॉक्टर दीप्ता महोदयाभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्य वुमन् पख्वाडा इति कार्यक्रमस्य अंतर्गतत्वेन अस्माभिः स्पर्धाः, कार्यशालाश्च समायोजिताः। तत्र छात्राणाम् एका कार्यशाला अपि च अध्यापकानां कृते अपि विशिष्टा कार्यशाला तावत् अस्माभिः आयोजिता। तत्र नैकविध अध्यापकाः आगताः, छात्राश्च समागताः आसन्। अत्र ये केऽपि छात्राः विभिन्नस्पर्धासु भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अध्यापकेभ्यः, सहायक अध्यापकेभ्यः, उपाचार्येभ्यः, आचार्येभ्यश्च अपि च कर्मचारिभ्यः ये केऽपि अत्र समागताः सन्ति, भवतां सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतम्। अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः प्रार्थनया क्रियते। अतः प्रार्थनां कर्तुम् अहं वसुप्रदाम् आह्वयामि। वसुप्रदा। सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे। सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे। सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे। सरस्वती नमोस्तुते। करधृत वीणा पुस्तक वरमणिमालालङ्कृत। करधृत वीणा पुस्तक वरमणिमालालङ्कृत। करधृत वीणा पुस्तक वरमणिमालालङ्कृत। सारि म पद प म पद स पद सा नि द प म रि स नि द सरि म पद प म पद स पद सा नि द प म रि स नि द सरि म पद सरि म रि स नि द प म रि स रि स स नि द। सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे। सरस्वती
नरहरिसूत विधिलालित नवमणियुत कम्भुगळे नरहरिसूत विधिलालित नवमणियुत कम्भुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुधाकर समधवळे सुरसेवित पदयुगळे सुधाकर समधवळे सारी म पद पम पद स नि द प म रि स नि सरी म पद पम पद स नि द प म रि स नि सरी म पद सरी म रि स नि द प म रि स नि द सर स्वती नमोस्तुते शारदे विद्या प्रदे सरस्वती नमोस्तुते वसुप्रदाये धन्यवादाः। यथा उक्तं व्यापिन्याम् अस्यां महिलापख्वाडायाम् अस्माभिः बह्व्यः स्पर्धाः आयोजिताः, कार्यशालाश्च आयोजिताः। तेषां सर्वेषां प्रतिवेदनं समर्पयितुम् अहम् आङ्ग्लविभागस्य अध्यक्षां डॉक्टर दीप्ता महोदयां सम्प्रार्थये। Good afternoon, everyone. Respected Registrar, Commander Chella Venkateshwar, my dear colleagues and students, it gives me immense pleasure to give a report on the Women Pakhwada, the activities that we have done during this Women Pakhwada. National Sanskrit University observed a 16-day discrimination against women Pakhwada on the directions of Ministry of Education, Government of India from 25th November 2002 to 10th December 2022. Professor R. Deepta was nominated as coordinator for the Pakhwada, and Dr. S. Vaishnavi, Dr. Bulti Das were nominated as additional coordinators to conduct the Pakhwada. The Pakhwada very appropriately was inaugurated by observing the International Day of Elimination of Violence Against Women on 25th November. Professor T. Sita Kumari, Professor of Law, Shri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam, who came as the chief guest, elaborated on how a woman's life is permeated with violence from birth to death, and she opined that though laws are necessarily made, the only way to eliminate violence against women is through inculcating values beginning with the family. Commander Chella Venkateshwar, the Registrar of the University and Guest of Honor on the day, spoke about how the day, that is International Day of Elimination of Violence Against Women, came to be observed internationally, and advised the youth to seek advice when overcome with violent emotions. Professor G.S.R. Krishnamurthy, the Vice Chancellor of the University, who presided over the function, suggested going back to our epics and Puranas to have role models for proper behavior and for respecting women. Earlier, the gathering was welcomed by the coordinator, and Dr. S. Vaishnavi, additional coordinator, compared the function, and Dr. Bulti Das proposed the vote of thanks. A sensitization workshop on sexual harassment was organized for the students of National Sanskrit University on 28th November 2022. Professor R.J. Ramashri, Professor of Computer Science and former Chairman of ICC NSU, conducted the workshop on the topic Sexual Harassment, What a Student Should Know. About 120 students participated in the workshop. Dr. S. Vaishnavi elaborated on the rules and roles of
ICC, and the procedure followed once a complaint is received, and Dr. Bulti Das used audio-visual aids to spread awareness on the issue. Professor R. Deepta, presiding officer, while welcoming the gathering, elaborated on the behavior which can be deemed harassment. Dr. Bulti Das proposed the vote of thanks, and the workshop was compared by Dr. S. Vaishnavi. As part of Women Pakhwada, song competition was organized for the students of National Sanskrit University on 30th November 2022. Students were asked to sing songs on women. Dr. Vaisar Balasubramaniam, Assistant Professor, Department of Education and Head in Charge, Department of Performing Arts, National Sanskrit University, was the judge for the competition. And the coordinators were also present while the competition went on. About 60 students participated in the competition. Poster making competition on women's rights was organized for the students on 2nd December 2022. Dr. Hansraj Prabhakar and Dr. M.A. Adarsh, assistant professors in Department of Performing Arts, were the judges of this event. The competition was conducted in the presence of the coordinators. Essay writing competition on the role of women in contemporary society was organized for the students of National Sanskrit University. And Dr. M. Dattatreya Sharma, Assistant Professor, Department of Education, was the judge for this event. And on 7th December, a debate competition was organized on the topic, Do Women Deserve Reservation?, in which students participated quite actively. Dr. Paramita Panda, Assistant Professor Purana Itihasa, Dr. Leena Chandra, Assistant Professor Sahitya, were the judges. On 8th December, a sensitization workshop was organized for teaching and non-teaching staff of NSU, especially on Sexual Harassment at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Dr. P. Neeraja, Head in Charge, Department of Women's Studies, Mahila University, who came as a resource person, elaborated on how gender constructs often relegate women to a secondary role and that perpetuates sexual harassment. Dr. G. Indira Priyadarshini, Assistant Professor of Law, SP Mahila Vishwavidyalayam, the other resource person, delineated the provisions of Sexual Harassment Act of 2013. This was followed by a very engaging interactive session with the audience, and Dr. S. Vaishnavi welcomed the guests and participants that day, and Dr. Bulti Das rendered the vote of thanks. On the penultimate day of Pakhwada, that is 9th December, Rangoli art competition was planned for the students, but it had to be cancelled due to inclement weather. The activities of the Pakhwada culminated today in the valedictory function, and it is pertinent that we have to celebrate valedictory function today. This is because today is International Human Rights Day also, which emphasizes the fact that women's rights are part and parcel of human rights, and discrimination against women is discrimination against nearly half of world's population. Therefore, discrimination against women cannot be allowed to persist. The observation of discrimination against women Pakhwada served the purpose for which it has been designated, that is, bringing awareness about women's discrimination within the campus and in society at large. As competitions organized as part of Pakhwada were thought-provoking, engaged the attention of girl students and boy students. As you would see, the number of boys who participated were more in number than the girls, and the prizes were also won more by boys rather than girls. The workshops conducted under the banner of Pakhwada successfully created a narrative of awareness and understanding among the staff, both men and women.
In addition to the above said goals, the Pakhwada also gave opportunity for students to participate in co-curricular activities, which COVID-19 situation had put a stop to in the previous 2 years. I would like to conclude with my heartfelt thanks to the administration of the university for granting us a very sumptuous amount to conduct the competitions and various activities, and giving their complete support to the organizing committee for conducting this Women Pakhwada. Thank you very much. दीप्ता महोदयायै हार्दाः धन्यवादाः। सम्प्रति वयम् अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः भवन्ति अस्माकं कुलसचिवाः कमाण्डर् छला वेङ्कटेश्वर महोदयाः। तान् सम्प्रार्थये कृपया मुख्यातिथिभाषणेन अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। అందరికీ నమస్కారం. Honorable Vice Chancellor Professor GSR Krishnamurthy Garu and Professor Sripada Bhatt Garu, Dean Academic Affairs, are not able to reach the venue, as we know, because of the inclement weather, sudden change in the weather that is troubling us today. But I am sure both of their blessings are with all of us, and with their blessings we shall continue the function today. As we all know, we started this function 16 days ago on the International Day of Elimination of Violence Against Women, and today it's culminating with International Human Rights Day. What a coincidence. In fact, probably this is one of the longest days for which an event is conducted, organized and celebrated. This is being celebrated at the behest of the instructions received from Ministry of Education, that they realize the importance and the gravity of the topic that is under consideration and discussion over these 16 days. All over the world is seized of these issues and has been continuously working to find recourse to them, solutions to them, under the able leadership of Professor Deepta Madam, Dr. Vaishnavi Madam and Dr. Bultidas Madam, and many others who formed part of the team of conducting the 16-day long events, required a great applause. Can I request all of you to stand and give a standing ovation? Thank you so much. It would not have been possible if the committee were to take it as one of their routine duties. These events would not have been conducted the way it is. They have assumed complete responsibility. They are convinced of the objectives of these events, wholeheartedly, selflessly worked day and night in making these events possible. My sincere thanks to you and your team, Madam. Your team has set an example, the way an activity or activities are to be conducted
We are grateful to you, ma'am. In fact, in the last 2 years that I have been here, roughly, probably this is one of the activity which has been conducted to the fullest satisfaction of the university, and many, many thanks to you and your team. I'm sure a lot of things have been deliberated with the issues connected with the women. They require no further emphasis. I'm sure these events would have brought in required level of awareness amongst all of us, the girls and boys, particularly to deal with the issues when it comes to violation or sexual harassment against women. I'm sure a lot of lessons would have been learnt during these sessions. If I were to ask you, if you find any of your friend going through the issues connected with violence, how is that you are going to extend your helping hand? अगर आपके कोई साथी या मित्र ऐसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है, तो उन्हें आप कैसे सहायता करेंगे, कैसे मदद करेंगे? How do you do that? Can anyone explain to me? अभी तो आपने 16 दिन का कार्यक्रम अटेंड किया है. Any one of you students, what is that you can do to you help your student? कुछ कर सकते हैं या मौन रहेंगे? क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, बताइए. फॉर एग्जांपल मेरी कोई फ्रेंड है जिसके साथ ऐसा कुछ होता है, सो इफ वो जो गर्ल है वो कुछ बोल नहीं पा रही है, तो आई कैन हेल्प हर. मैं उसको उसके साथ जो हुआ है वो जानकर किसी मैम के थ्रू मैम के पास जाकर उनके सब प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ. फिर जैसे आईसीसी के पास जाके मैं हेल्प मांग सकती हूँ. और जैसे उन लोगों ने बताया है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी फिर जो कुछ हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज करके उस पर एक्शन लेंगे. सो मैं हेल्प कर सकती हूँ उनकी. Thank you so much. Anyone? Yeah. Anyone else? Yeah, thank you so much, madam. This is the outcome of your 16 days of efforts. So the message has reached the needy, while some of them are not able to express, but definitely they have taken lessons from these activities and are now well equipped to meet the challenges. They are not going to be alone in fighting against any violations against their rights. I am sure they will stand up, fight it out, and emerge victorious. And in the end, I would like to once again thank Deepta Madam and her team for conducting events, particularly today's event, with a fighting spirit, notwithstanding the kind of weather that we are going through. Thank you very much, ma'am, and I wish everyone best of luck. Thank you. Thank you so much. महोदयेभ्यः हार्दं हार्दं धन्यवादं व्याहरामि. न केवलं वयं तिस्रः, परन्तु समित्यां ये अहर्निशं कार्यं कृतवन्तः अस्माकं सर्वेषां पक्षतः हार्दं हार्दं धन्यवादः महोदयः. भवतां वचनैः वयं सर्वेपि पुरस्कृताः, उत्साहम् अस्माकम् इतोपि वर्धितम् इति उद्घोषयितुम् इच्छामि. धन्यवादाः. सम्प्रति यदर्थं वयं सर्वेपि उपस्थिताः स च कालः छात्राणां समागतः. सम्प्रति पुरस्कारवितरणं भविष्यति. अहं कुलसचिवान् सम्प्रार्थये कृपया अग्रे आगत्य अस्माकं छात्राणां कृते यथा नामानि अहम् आह्वयामि तथैव तेषां कृते पुरस्काराणि यच्छन्तु इति. क्रमशः स्पर्धानुगुणं मया नामाह्वानं क्रियते. कृपया अग्रे आगच्छन्तु.
मैडम सम्प्रति स्पर्धानुगुणं मया नामाह्वानं क्रियते, कृपया आगच्छन्तु। प्रथमा स्पर्धा आसीत् गीतगानस्पर्धा। गीतगानस्पर्धायां प्रथमपुरस्कारं प्राप्तवती AR वसुप्रदा, शास्त्री तृतीयवर्षीया छात्रा। यहाँ आ जाओ, हाँ, वो आएगी। AR वसुप्रदा, UG दोहोतिया, प्राक्शास्त्री प्रथमवर्षीया छात्रा, द्वितीयपुरस्कारेण पुरस्कृता अस्ति। तृतीयपुरस्कारं प्राप्तवान् साईराम पाढी, शास्त्री तृतीयवर्षीयः। अनन्तरं भवति पोस्टर मेकिंग स्पर्धा। कृपया सिद्धाः भवन्तु। यशराज पाठक, प्राक्शास्त्री प्रथमवर्षीयः छात्रः। सैरेन्द्री देहरी, शास्त्री द्वितीयवर्षीयः, पोस्टर मेकिंग स्पर्धायां द्वितीयपुरस्कारं प्राप्तवान्। स्वाधीन प्रधान, शास्त्री द्वितीयवर्षीयः, पोस्टर मेकिंग स्पर्धायां तृतीयपुरस्कारेण पुरस्कृतः। यशराज पाठक, प्राक्शास्त्री फर्स्ट ईयर, पोस्टर मेकिंग। यशराज पाठक खलु? हाँ। ओके। शैरेन्द्री देहरी, स्वाधीन प्रधान, पोस्टर मेकिंग, तृतीय पुरस्कारः। आगच्छतु। शिवराज स्वामी, निबंधलेखन स्पर्धायां प्रथमपुरस्कारेण पुरस्कृतः। भुवन मोहन वशिष्ठ, एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन, द्वितीयपुरस्कारेण पुरस्कृतः। प्रिंस कुमार, शास्त्री प्रथमवर्षीयः। भुवन मोहन वशिष्ठ अस्ति खलु? प्रिंस कुमार, निबंधलेखन स्पर्धायां तृतीयपुरस्कारेण पुरस्कृतः। सम्प्रति वादविवाद स्पर्धा। वादविवाद स्पर्धायां पक्षे चतुर्भिः प्राप्तं, विपक्षे चतुर्भिः प्राप्तं। तत्र प्रथमपुरस्कारः अवधेश कुमार शर्मा। लोकनाथ नेपाल, नेपाली, लोकनाथ नेपाली नास्ति वा? सुजीत कुमार पांडे, सुजीत कुमार पांडे। रितेशा चक्रवर्ती, कृपया आगच्छतु। रितेशा चक्रवर्ती वादविवाद स्पर्धायां द्वितीयपुरस्कारं प्राप्तवती। शन्तनु महाकुर, शन्तनु महाकुर, शास्त्री द्वितीयवर्षीयः, वादविवाद स्पर्धायां तृतीयपुरस्कारं प्राप्तवान्। अथर्व दीक्षित, शास्त्री द्वितीयवर्षीयः, वादविवाद स्पर्धायां तृतीयपुरस्कारं प्राप्तवान्। अथर्व दीक्षित। ओमकार हिंगने, ओमकार हिंगने, वादविवाद स्पर्धायां सांत्वना पुरस्कारं प्राप्तवान्। सुदीप मंडल, आचार्य द्वितीयवर्षीयः, सुदीप मंडल, आचार्य द्वितीयवर्षीयः, वादविवाद स्पर्धायां सांत्वना पुरस्कारं प्राप्तवान्। सुदीप मंडल खलु? पार्टिसिपेशन। Quite well, the best. अधुना प्रत्येकं स्पर्धायां ये प्रतिभागिनः आसन्, प्रतिभागितायाः प्रमाणपत्रं सम्प्रति भविष्यति। अतः स्पर्धाशः अहम् आह्वयामि, कृपया आगच्छन्तु। गीतगानस्पर्धायाम् इमानी वेंकट सुब्बू महालक्ष्मी, शास्त्री द्वितीयवर्षीया।
शिवपद्मावती प्राक्शास्त्री प्रथम वर्षीया. झरना देवशर्मा BA सेकेंड ईयर. झरना देवशर्मा. लूजी दुहोतिया प्राक्शास्त्री प्रथम वर्षीया. हरि ओम, कृपया शीघ्रम् आगच्छन्तु. भवती झरना वा? झरना देवशर्मा BA सेकेंड ईयर. आगच्छतु. लूजी दुहोतिया प्राक्शास्त्री प्रथम वर्षीया. AR वसुप्रदा शास्त्री तृतीय वर्षीया. सुपर. समन्विता के प्राक्शास्त्री फर्स्ट ईयर पार्टिसिपेशन. समन्विता के नास्ति. साईराम पाढ़ी शास्त्री तृतीय वर्षीयः. शीघ्रम् आगच्छतु. साईराम पाढ़ी. दीपाली कर शास्त्री द्वितीय वर्षीया. आर्या खुले BA द्वितीय वर्षीया. दीपाली कर नास्ति. आर्या खुले. श्री प्रज्ञा प्राक्शास्त्री द्वितीय वर्षीया. शीघ्रम् आगच्छतु. श्री प्रज्ञा प्राक्शास्त्री द्वितीय वर्षीया. हैंदवी आर्या आचार्य द्वितीय वर्षीया. हैंदवी आर्या अस्ति. रितेशा चक्रवर्ती आचार्य द्वितीय वर्षीया. शीघ्रम् आगच्छतु. आदर्श कुमार प्राक्शास्त्री द्वितीय वर्षीयः. आदर्श कुमार आगच्छतु. आदर्श कुमार अस्ति वा? नास्ति. अध्यासा पंडा BSc कंप्यूटर साइंस द्वितीय वर्षीया. अध्यासा पंडा अस्ति. अनेन गीतगानस्पर्धायाः प्रतिभागिनां प्रमाणपत्र वितरणं समाप्तं. सम्प्रति पोस्टर मेकिंग इति या स्पर्धा चालिता, तत्र प्रतिभागितायाः प्रमाणपत्राणि वितीर्यन्ते. यशराज पाठक प्राक्शास्त्री प्रथमवर्षीयः. यशराज पाठक अस्ति वा? सैरेन्द्री देहरी शास्त्री प्रथमवर्षीया. एकक्षणं तिष्ठतु. यशराज पाठक शैरेन्द्री अत्र आगच्छतु. अत्र पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अस्ति. अत्र स्वाधीन प्रधान. स्वाधीन प्रधान कृपया आगच्छतु. शास्त्री सेकेंड ईयर. मनस्विनी दास. मनस्विनी दास. अक्षया जी BSc कंप्यूटर साइंस तृतीय वर्षीया. अक्षया. B अमृता प्राक्शास्त्री फर्स्ट ईयर. B अमृता. जमुना सोनावल नास्ति. लूजी दुहोतिया प्राक्शास्त्री फर्स्ट ईयर. आगच्छतु. नेक्स्ट लूजी मैडम. उपासना नाथ प्राक्शास्त्री प्रथम वर्षीया. समन्विता KN प्राक्शास्त्री प्रथम वर्षीया नास्ति. द्वारका जयलक्ष्मी शास्त्री तृतीय वर्षीया नास्ति. श्री प्रज्ञा टी प्राक्शास्त्री द्वितीय वर्षीया. आगच्छतु. श्री प्रज्ञा इस् हियर् मैम. अनेन पोस्टर मेकिंग स्पर्धायाः प्रमाणपत्राणि समाप्तानि. सम्प्रति निबन्धलेखन स्पर्धायां ये प्रतिभागिनः आसन् कृपया आगच्छन्तु. शिवराज स्वामी निबन्धलेखन स्पर्धायां. भुवन मोहन वशिष्ठ. भुवन मोहन वशिष्ठ. प्रिंस कुमार. भुवन मोहन वा? प्रिंस कुमार. शांभवी जोशी अस्ति. दीपाली कर नास्ति. झरना देव शर्मा. झरना देव शर्मा आगच्छतु. श्री प्रज्ञा पेरु शांभवी. झरना देव शर्मा नेक्स्ट नास्ति. झरना देव शर्मा. श्री प्रज्ञा. आर्या खुले. अनुरिमा मैत्रा. आर्या खुले नेक्स्ट मैडम. अनुरिमा मैत्रा इज आल्सो देयर. वैष्णवी पंडा. तनुश्री तनुजानंदा. तनुश्री अस्ति. तनुश्री इज नॉट देयर. अनुव्रता देवी. अनुव्रता. अवधेश कुमार. अवधेश कुमार.
अजीत सिंह अग्रिमः अजीत सिंह नीलोधर हरिजन सिंह मैम नीलोधर इज नॉट देयर तन्मय खन्ना नीलोधर अस्ति तन्मय खन्रा नास्ति सुमंत के आर पांडे सुमंत सम्प्रति वादविवादस्पर्धायां ये प्रतिभागिनः भागं गृहीतवन्तः तेषां कृते प्रतिभागितायाः प्रमाणपत्रवितरणं भविष्यति। समन्विता नास्ति अवधेश कुमार शर्मा शंतनु महाकुर डिबेट देव कुमार सुजीत कुमार पांडे Dev Kumar is there. Sujit Kumar is also there. Neeraj Padmakar. Dev Kumar. Sujit Kumar. Neeraj Padmakar. Sudeep Mandal. एते सर्वेपि पक्षे वादं कृतवन्तः विपक्षे राजेंद्र कुमार पति अथर्व दीक्षित he's there ma'am he's there Atharv is also there कुमार उत्पल अस्ति वा रितेशा चक्रवर्ती रथी श्रेयस राजेश्वर अस्ति वा लोकनाथ नेपाली नास्ति ओके न अत्र आगच्छन्ति तावदेव रितेशा चक्रवर्ती रथी श्रेयाश भवान् रथी श्रेयस राजेश्वर ओंकार हिंगने ही इज नॉट देयर ओंकार हिंगने आगच्छतु चतस्रः स्पर्धाः आयोजिताः तासां प्रमाणपत्रमपि अस्माभिः वितरणं कृतं सम्प्रति अध्यापकानां कृते शिक्षणेतरकर्मचारीणाम् उभयोः कृते अस्माभिः कार्यशाला काचित् आयोजिता 8मे दिनाङ्के तत्र सम्प्रति अस्य कार्यक्रमस्य विभिन्न स्पर्धासु ये न्यायनिर्णायकत्वेन समागताः अपि च ये साहाय्यं कृतवन्तः द्वयोः कृतेपि प्रमाणपत्राणि दातव्यानि इति अस्माकं सङ्कल्पः आसीत्। तत्र क्रमशः आह्वयामि डॉक्टर परिमिता पंडा महोदया एताः तावत् वादविवादस्पर्धायां न्यायनिर्णायिकात्वेन समागताः आसन्। वैजर्सु बालसुब्रह्मण्यं महोदयाः नागताः, ही इज नॉट देयर। साहित्य विभागस्य सहायक अध्यापिका अस्ति डॉक्टर के लीनाचंद्रा महोदया। एताः अपि वादविवादस्पर्धायां निर्णायकत्वेन समागताः आसन्। दत्तात्रेय महोदयः नास्ति, आदर्श महोदयः नास्ति, हंस प्रभाकर महोदयः नास्ति, तपन कुमार महोदयः। अयं च सन्दर्भः अत्यन्तं समुचितः अस्ति। सप्ताहद्वयं यावत् अस्माकं कृते स्वागतपत्रं, निमन्त्रणपत्रं, प्रमाणपत्राणि अहर्निशं 11:15 अस्माकं कृते साहाय्यं कृतवन्तः इमे। अतः सुतराम् एते अस्मिन् सन्दर्भे अवश्यं स्मर्तव्याः।
महान्तः धन्यवादाः महोदयाः। भवतां साहाय्यं विना अयं कार्यक्रमः सफलं भवितुं नार्हति एव। डॉक्टर तपन कुमार महोदयाः विभागस्य सहायक अध्यापकाः। अत्यन्तं विशिष्टाः अस्य कार्यक्रमस्य पृष्ठभूमौ इमे कार्यं कृतवन्तः। एवमेव अन्यः विशिष्टः कश्चन सहायक अध्यापकः भवति अस्माकं अनुवाद विभागस्य कनपाल कुमार महोदयाः। तेषां सहयोगं विना अयं कार्यक्रमः एतावत् पर्यन्तं सुतरां भवितुं नार्हति। एतेषां नाम नास्ति, तथापि प्रतिदिनम् आगत्य प्रत्येकं कर्मणि अस्माकं कृते साहाय्यं कृतवन्तः। आनयने, गमनागमने, व्यवस्थायां सर्वत्रापि यथा तेषां वाग्वर्धिन्याम् अनुभवः अस्ति तदनुगुणम् अस्माकं कृते नितरां साहाय्यं कृतवन्तः। अतः महोदयाय हार्दं धन्यवादं व्याहरामि। धन्यवादाः। तथैव के सुजनी महोदया अद्य नागता, तथापि ICT पक्षतः तासां साहाय्यम् अस्माभिः प्रतिदिनं स्वीकृतम् इति अस्माभिः स्मर्तव्यम् अत्र। तथैव अन्यैकः विशिष्टः पुरुषः अस्ति अस्माकं के चेतन महोदयाः। NAC कार्ये भवतु, भिन्न कार्ये भवतु, अस्माकं सप्ताहद्वयमपि नितरां कार्यं कृतवान्। अपि च यदा कदापि रात्रौ तस्य यावदपि कार्यं भवतु, अन्ततो गत्वा FB मध्ये अपडेट् करणं, यत्र कुत्रापि टेक्निकल क्लेशः भवति चेदपि अस्मान् सूचयित्वा अस्माकं कृते बहुविध साहाय्यं कृतवान्। अतः भवतां कृते विशिष्ट अभिनन्दनानि महोदय। अस्माकं साफल्ये भवतां साहाय्यं बहु अधिकमस्ति। धन्यवादाः। तथैव अस्माकं वालंटियर्स भवन्ति नागय्य हिरेमठ नागतः श्रीकांत रेड्डी। विद्यापीठस्य अस्य विश्वविद्यालयस्य प्रत्येकं कर्मणि अयं विद्यावारिधि शोधछात्रः कैमरामैन रूपेण सर्वत्र चित्राणि स्वीकरोति। अतः अस्माभिः चिन्तितम् अस्यापि प्रमाणपत्रं सुतरां भवेत्। अतः अस्मै अपि प्रमाणपत्रम् एकं दत्तं। धन्यवादाः। प्रत्येकं कार्यक्रमे आगत्य चित्राणि स्वीकृतवान्, अस्माकं कृते बहुविध साहाय्यं कृतवान्। धन्यवादाः। तथैव मणिकण्ठसाई नागतः, श्रीश नागतः। अस्तु, एते अस्माकं वालंटियर्स भवन्ति। अन्तिमः कार्यक्रमः भवति अध्यापकानां कार्यशाला आसीत् काचित्। कार्यशालायाः प्रमाणपत्राणि सूचीत् एकवारम्। तत्र क्रमशः आह्वयामि। तपन कुमार महोदयाः अस्माकं सांख्य विभागस्य सहायक अध्यापकाः कार्यशालायाम् आगत्य स्व उपस्थितिं दत्तवन्तः। अतः कृपया आगच्छन्तु। उषा महोदया अस्माकं शिक्षणेतर कर्मचारिणी अस्ति। कृपया आगच्छन्तु। साहित्य विभागस्य सहायक अध्यापिका अस्ति डॉक्टर के लीना चंद्रा महोदया। कृपया आगच्छन्तु। संगणक विभागस्य सहायक अध्यापिका अस्ति जी नागलक्ष्मी महोदया। कृपया आगच्छतु। पुराण इतिहास विभागस्य सहायक उपाचार्या अस्ति अस्माकं डॉक्टर परिमिता महोदया। कृपया आगच्छतु। आंग्ल विभागस्य सहायकाध्यापकः अस्ति अस्माकं डॉक्टर जगन्मोहन महोदयः। कृपया आगच्छन्तु। ज्योतिष विभागस्य अतिथि अध्यापकाः सन्ति डॉक्टर नारायण नंबूद्री महोदयाः। कृपया आगच्छन्तु। शिक्षा विभागस्य सहायक अध्यापकः अस्ति डॉक्टर ए सच्चिदानंदमूर्ति महोदयाः। कृपया अत्र आगच्छन्तु।
types of treatment, why we were not able to, that question. I was asking like actually it is axiomatic and you understand why the two things doesn't equate. It must be a thought-provoking session. Initiated by him. Yeah, please come. No. Yeah. For attending. अनुवादविभागस्य सहायक अध्यापकः अस्ति अस्माकं डॉक्टर कनपालकुमार महोदयः कृपया आगच्छन्तु। साहित्यविभागस्य उपाचार्यः अस्ति अस्माकं डॉक्टर बलिचक्रवर्ती महोदयः कृपया आगच्छन्तु। त्यक्ताः वा? शिक्षणेतरकर्मचारिणः कर्मचारिषु तत्र मल्लिका महोदया समागता कृपया आगच्छन्तु। तथैव अत्र मानसा महोदया कृपया आगच्छन्तु। नेक्स्ट केपि न मानसा महोदया कार्यक्रमस्य अस्य सहसंयोजिका अस्माकं साहित्यविभागस्य सहायक अध्यापिका डॉक्टर बुल्टी महोदया कृपया आगच्छतु। Madam. Bulti madam. Please. Dr. S. Vaishnavi. Big round of applause. लोकनाथ नियोपली अस्ति वा? आगच्छतु कृपया आगच्छतु। एषः विलम्बेन आगतः, आगच्छतु। अस्यां स्पर्धायां धन्यवादाः महोदयाः। सम्प्रति धन्यवादसमर्पणाय अहं साहित्यविभागस्य सहायक अध्यापिकां डॉक्टर बुल्टी महोदयां सम्प्रार्थये। ये केपि स्वकीयम् अनुभवं वक्तुम् इच्छन्ति चेत् छात्रेषु अथवा अध्यापकेषु ये केपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया आगच्छन्तु। छात्राः अथवा अध्यापकाः ये केपि आगच्छन्तु। तावदप्पु किमपि करणीयं खलु। नमस्ते भाई। चेटी भवन्य किलकेटी कदंब वनवाटी शुनाकी पटली कोटी रचारुतर कोटी मणि किरण कोटी करंजित पद
पाटी रगंधिकुच शाटी कवित्व परिपाटी मगाधिपसुत घोटी कुल्लादधिक धाटी मुदार मुखवीटी रसेन तनुताम्। वस्तुतः महदिदं प्रमोदस्थानम् इद अद्य अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति अस्माकं कुलसचिवमहोदयाः एवं दीप्तमहाभागाः। अत्र कार्यक्रमस्य विषये अनुभवं वक्तुम् एवम् आहूतवन्तः। मम कश्चन मया एकः अनुभवः प्राप्तः। यतः एतादृश कार्यक्रमाणां सञ्चालनेन अस्मासु नाम महिलासु भवतु पुरुषेषु भवतु उत्साहम् एवं वर्धयितुं वयं शक्नुमः। वारं वारं बहुत्र वयं वार्तापत्रिकायां न्यूस् पेपर् मध्ये एवं रूपेण टीवी मध्ये बहुत्र वयं पश्यामः महिलानाम् उपरि किं किं जायमानमस्ति। प्रतिदिनं एतादृशकार्यक्रमाः चालयन्तु नाम तथापि विपरीतरूपेण कार्याणि एवं जनाः कुर्वन्ति स्म। परन्तु अस्माकम् इति एकवारं वयम् तत्र वाङ्मयम् अवलोकयामः चेत् तत्र बहुत्र पुरुषाणां स्त्रीणां समप्राधान्यं दत्तमस्ति। एकमेव उदाहरणम् अहम् उक्त्वा अहं तत्र उपस्थापयामि। एकम् उदाहरणं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। चित्रं देहि विदेह राजनगरे धात्री तलात् कन्यका जायन्ते किल नाथ सम्प्रतिमयात् चित्राति चित्रं श्रुतं साकेते खलु पायसान्नत्य बला प्रादुर्भवं त्यर्भका सीताराम विनोद भाषणमिदं पायादपायज्जगतु। एतत् श्लोकम् अत्र किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते तदानीन्तनकाले स्त्रीपुरुषयोः मध्ये कोऽपि भेदः नासीत्। नाम तत्र वुमेन् एम्पवर्मेण्ट् इति वयं वदामः वारं वारं। तदानीन्तनसमये तथा समानरूपेण ते दृष्टवन्तः एवम् आचरितवन्तः। अत्र एकस्मिन् सन्दर्भे भगवान् श्रीरामचन्द्रः सीतायाः पुरतः परिहासं करोति सीतायाः उपरि। हे सीते अहम् एकां वार्तां श्रुतवान् साम्प्रतिककाले बह्व्यः महिलाः भूमितः एवम् आविर्भवन्ति इति एकां चित्रां वार्ताम् अहं श्रुतवान् इति श्रीरामः उक्तवान्। परन्तु सीता सामान्या नास्ति। सा पतिव्रता शिरोमणि शक्तिस्वरूपिणी सीता विद्वशिरोमणि आसीत्। सा किमुक्तवती साकेते खलु पायसान्नते बला प्रादुर्भवन्ते त्यर्भकाः इति सा उक्तवती। नाम हे श्रीरामचन्द्रमूर्ति अहमपि एकां वार्तां श्रुतवती। का वार्ता नाम साम्प्रतिककाले पुरुषाः पायस स्वीकरणेन मातुगर्भात् आगच्छन्ति इति सा उक्तवती। पश्यन्तु अनेन सीताराम विनोद भाषणमिदं पायादपायज्जगत्। अनेन श्लोकेन किं जायते तदानीन्तनकाले स्त्री पुरुषयोः मध्ये भेदः नासीत् समप्राधान्यम् आसीत्। तादृशी भावना साम्प्रतिकाले सर्वेषां मनसि यदि भवति चेत् समीचीनम्। अनेन कार्यक्रमेण प्रायः बह्व्यः छात्राः एवं अस्माकम् अध्यापकाः बहून् विषयान् ज्ञातवन्तः। यतः आरम्भात् आन्तं यावत् ये कार्यक्रमाः अत्र सञ्चालिताः अस्मासु किञ्चित् स्त्रीणाम् उपरि। यतः स्त्रियः सर्वदा पूजनीयाः एव तत्र किमपि डौट् एव नास्ति सन्देहः एव नास्ति। यतः తెలుగు భాషలో అస్తి ఎదిరించే శక్తి ఉంటే ప్రతి అబల ఒక సబల అవుతుంది అని తెలుగు భాషలో ఉంది. నామ తస్యాః ఏవం స్యాత్ सर्वत्र इदानीं वयं पश्यामः पुरुषाणाम् अपेक्षया बहुषु क्षेत्रेषु महिलाः अग्रे आगच्छन्ति. अतएव एकः श्लोकः अस्ति कृते च रेणुका शक्ति त्रेतायां जानकी तथा द्वापरे द्रौपदी शक्ति कलौ शक्ति गृहे गृहे. कृतायुगे तावत् रेणुकादेवी शक्ति आसीत्, त्रेतायुगे सीतादेवी शक्ति आसीत्, द्वापरयुगे द्रौपदी शक्ति आसीत्. परन्तु साम्प्रतिककाले अत्र ये उपस्थिताः ये सन्ति प्रपञ्चे ये महिलाः सन्ति सर्वाः अपि महिलाः शक्तिस्वरूपिण्यः एव इति उक्त्वा एतद् अवकाशं दत्तवतेभ्यः भवद्भ्यः धन्यवादान् व्याहरम्. धन्यवादाः महोदयेभ्यः. सम्प्रति डॉक्टर बी बलिचक्रवर्ती महोदयान् सम्प्रार्थये कृपया आगत्य अत्र द्वित्रिवचनानि श्रावयन्तु इति. सभा मध्ये विराजिताः अस्माकं प्रियतम कुलसचिवाः आचार्य चल्ला वेंकटेश्वर महोदयः कमांडर is commanding to all aspects. I know very well. Thank you sir. तथैव अस्माकं विश्वविद्यालय वरिष्ठ आचार्याः मम भगिनी कल्प आचार्य दीप्ता मैडम अथवा सन्ति विराजन्ते मम भगिनी कल्पाः सर्वेषां सर्वासां मम प्रिय छात्राः.
स्त्री शक्ति, देयर इज नो डाउट, स्त्री शक्ति स्वरूपिणी एव। यदि पश्यन्तु अस्माकं गृहे पश्यामः चेत्, मम गृहे पश्यामः चेत् मम पत्नी शक्ति स्वरूपिणी एव। यस्, सत्यं वदामि, प्रातः 5:15 उत्थाय सर्वाणि कार्याणि कृत्वा मह्यं किं रुचिः तद् सर्वं दत्त्वा, आहारं भवतु सर्वव्यवस्था परिकल्प्य सा पुनः आफीस् गत्वा कार्यं कृत्वा सायम् आगत्य पुनः चायं दत्त्वा सर्वं करोति सुनायासेन विलासेन। कदापि तस्याः मुखे दुःखं न भवति, क्लेशः न भवति। ऐ एम् वेरी लक्की पर्सन्, सत्यं वदामि। अतः कथयन्ति नारी लेनि इल्लु नारी लेनि विल्लु, नारी लेनि इल्लु नारी लेनि विल्लु। देयर इज ए धनुस्सु थ्रेड अस्ति, थ्रेड एव नारी, विल्लुनि धनुस्सु तद् गुणं तन्तु गुणमस्ति। विना तन्तुना तत् नारिः धनुः नो यूस्। तथैव विना स्त्री गृहिणी गृहमुच्यते, विना स्त्री तद् गृहं न शोभते। यस्, कार्येषु दासी करणेषु मन्त्री, भोजेषु माता శయనేషు రంభ, అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ, ఆ జన్మే అందరికీ శుభకరం, అందరికీ శుభం ఆ జన్మ. ఇది చిన్న స్మాల్ సాంగ్. పరిపూర్ణ ఇల్లమ్మ, ఎస్ ఇల్లాలమ్మ, పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మ. కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి, భోజేషు మాత శయనేషు రంభ, రూపేషు లక్ష్మి, क्षमया धरित्री, षट्कर्मयुक्त सती इति स्वागतमस्ति अस्माकं। कवि रचना सिनी कवि ओन्ली 4 तत्र अस्तु। सो वयं कथयामः चेत् स्त्री विषये पश्यन्तु, वितौट् वुमेन् देयर इज नो मैन्, WOMAN तत्र मैन् अस्ति, वुमन् मध्ये मैन् अस्ति, किं भवना WOMA वुमन् स्पेलिङ्ग् पश्यन्तु, तत्र क्या अस्ति, मैन् अस्ति। तथैव नारीणां भूषणं पति अपि, मैडम अनिल बाबा, नारीणां भूषणं पति खलु मैडम, पति अपि अपेक्षितं। किन्तु पश्य मुख्यं पश्यन्तु स्त्री शक्ति, स्त्री। अतः इदानीं छात्राः कथयन्ति, इतः वक्तुम् इच्छामि किन्तु छात्राः अपि कथयन्ति। थैंक यू मैडम। बलिचक्रवर्ती महोदयेभ्यः धन्यवादाः। अत्यन्तं प्रमुखं सन्देशम् अस्मान् बोधितवन्तः। सम्प्रति आर्या खुले स्व अनुभवं व्यक्तीकर्तुम् इच्छति एषा। सप्ताहद्वय वदतु, हिन्द्यां वदतु, चिन्ता नास्ति। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं दीप्ता मैम, वैष्णवी मैम और बुल्टी मैम को थैंक यू बोलूँगी कि ये वुमेंस पखवाड़ा रखने के लिए, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली है। आईसीसी के बारे में बहुत कुछ पता चला है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम क्या एक्शंस ले सकते हैं। और बहुत सारी लड़कियां, मतलब अगर ऐसा होता भी है तो कुछ लड़कियों को ये होता है कि ये बात पूरे यूनिवर्सिटी में सबको पता चल जाएगी, ऐसा कुछ। पर आईसीसी में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमको बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बात सिर्फ हम लोगों में रहेगी, बाकी बाहर किसी को नहीं पता चलेगी। तो इसके वजह से वुमेंस पखवाड़ा की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता चली है। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए थे, सिंगिंग कंपटीशन, कार्ड मेकिंग कंपटीशन एंड डिबेट कंपटीशन। सो इन सब में हम सब ने पार्टिसिपेट किया है और लेक्चर्स सब अटेंड करके किया है। ऐसा नहीं किया कि लेक्चर्स है तो कंपटीशन है तो लेक्चर्स बंक, ऐसा नहीं, सब ने सब मैनेज करके किया है। और बहुत से लोग थे जो मतलब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको पार्टिसिपेट करना है, जिनमें वो जो ये सब कर सकता है, बट वो डर के वजह से सामने नहीं आते हैं। बट इन सब कॉम्पिटिशन्स के थ्रू वो लोग भी आगे आए हैं, सबका कॉन्फिडेंस इसके वजह से बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैं मैम, तीनों भी मैम को बहुत थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू मैम।
धन्यवादाः। सम्प्रति सम्माननकार्यक्रमः भवति। अहं साहित्यविभागस्य उपाचार्यान् डॉक्टर बलिचक्रवर्ती-महोदयान् सम्प्रार्थे कृपया अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवानां कमाण्डर् छल्ला वेङ्कटेश्वर-महोदयानां सम्माननं कुर्वन्तु इति। पुष्पैः राङ्कवप्रदानेन फलैश्च सम्माननं कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। No, this is for you, sir. Sir, this is for you. तथैव पुराणेतिहासविभागस्य उपाचार्यां डॉक्टर परिमितपण्डमहोदयां सम्प्रार्थये अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य संयोजिकाम् आङ्ग्लविभागस्य अध्यक्षां डॉक्टर दीप्तामहोदयानां कृते सम्माननं कुर्वन्तु इति। पुष्पैः फलैः राङ्कवप्रदानेन सम्माननं कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। जस्ट मिडिल लो वेले। But these two, Okay, it's okay, it's okay. Vaishnavi and Gulti, who deserve this, not me. It is they who deserve it. कार्यक्रमस्य अस्य अन्तिमघट्टे स्मः। धन्यवादसमर्पणाय साहित्यविभागस्य सहायक आचार्यां बुल्टी महोदयां सम्प्रार्थये। Thank you all. Thank you, Vaishnavi Garu. First and foremost, I would like to thank our Vice Chancellor Sir, Professor G.S.R. Krishnamurthy Sir, जिनके अनुप्रेरणा से, जिनके साहस के वजह से हम आज तक ये 16 दिन तक चल रही इस वुमेन महिला पखवाड़ा को हम आज समापन समारोह तक आ चुके हैं। थैंक यू। इस मंच से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ महिला पखवाड़ा 2022 टीम के तरफ से सर। देन आई वुड लाइक टू थैंक आवर एंथुजियास्टिक वेरी मच सपोर्टिव रजिस्ट्रार सर। सर आपका हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता मैं ज्ञापन करती हूँ जिस तरह से एक एक विषय को आपने हमारे साथ सपोर्ट देकर हमें 16 दिन तक ये कार्यक्रम परिचालना करने के लिए साहस दी, हिम्मत दी और हमें आज समापन तक हमारे साथ रहे सर। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। उसके बाद धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे महिला पखवाड़ा 2022 के कोऑर्डिनेटर मैडम प्रोफेसर आर दीप्ता मैडम। आपकी अनुप्रेरणा, आपकी साहस, आपकी धैर्य को नमन है, प्रणाम करती हूँ ऐसे साहस धैर्य को। जिन्होंने 25 से शुरू होने वाली थी महिला पखवाड़ा, 10 दिन पहले मिली थी मैं सामने ही भारत माता के वहां, वो पकड़ के मुझे बोली, बुल्टी एक कार्यक्रम करना है, तुम दोगी क्या साथ? मैडम आप बस बोलिए, ऑर्डर कीजिए, मैं आपके साथ हूं। नहीं, डॉक्यूमेंट के साथ करना है। मैडम डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आपके साथ हूं। शुरू से लेकर 1.5 साल तक मैं दीप्ता मैडम को देख रही हूं, जिस तरह से बहुत शांत स्वभाव की है, जिस तरह से सुलझी हुई है, कोई भी समस्या हो उसका हल मैडम के पास है। क्योंकि हम आईसीसी में भी देख रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से धैर्य के साथ मैडम अपनी मैं आपा खो देती हूँ बीच बीच में, मैडम हमें समझाती है ऐसा नहीं करना है, हमें कैसे काम करना है पहले समझाना है, लड़कियां है लड़के हैं जो भी है उनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना है, जो भी सच है उसको सामने लाओ, जो सच के साथ खड़े रहना है आईसीसी को। तो मैडम
आपके इस अनुप्रेरणा, इस इंस्पिरेशन, मोटिवेशन को सच में मैं दिल से और इस महिला पखवाड़ा की तरफ से आपको सल्यूट करती हूँ। थैंक यू। इतनी ज्यादा आप स्वस्थ भी नहीं है, उनका तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मेंटली, फिजिकली कंटिन्यूअसली मेरे और वैष्णवी गारू के साथ कंटिन्यूअसली थी। शायद हम लेट आते हैं, मैडम कभी लेट नहीं आती। आज का ये कार्यक्रम हम बहुत डर रहे थे, मैडम कैसे करेंगे, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, नेचुरल कैलामाइट है, नो बुल्टी। हमने कमिटमेंट कर दिया तो हम करेंगे। आपके इस आपने जिस तरह से साहस दिया सुबह से लेकर कि हम अभी धन्यवाद ज्ञापन तक पहुंच गए हैं, इसके लिए फिर से एक बार थैंक यू देना चाहती हूँ। हमारे महिला पखवाड़े में जितने भी सारे हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स ने हमारा साथ दिया, जजेस के रूप में एक फोन के बाद ही वो तैयार हो गए कि नहीं हम आएंगे, इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ डॉक्टर पारमिता पांडा मैडम को, थैंक यू डॉक्टर नागलक्ष्मी मैडम, थैंक यू लीना चंद्रा मैडम, थैंक यू आदर्श सर, थैंक यू हंस प्रभाकर सर, थैंक यू बाला सुब्रमण्यम सर, थैंक यू दत्तात्रेय सर। जजेस के रूप में जो लोग थे उनका नाम मैंने अभी लिया। अब हमारे जो बैकबोन सपोर्ट थे महिला पखवाड़ा के पीछे, वो है डॉक्टर तपन कुमार गडई सर। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद सर। हमें शुरू से लेकर आप जिस तरह से रात को 12 बजे तक जब भी वैष्णवी गारू आपको कोई भी काम देती थी, आप पूरा कंप्लीट करके हम तक पहुंचाना, और सर्टिफिकेट को लेकर, बैनर को लेकर। मैं और एक चीज इंक्लूड करना चाहती हूँ, तपन सर रात को 8 साढ़े 8 बजे तक भी बैनर को कैसे फिट करना है, जो बैनर लेकर आए थे उनके साथ खड़े होकर काम किए। फोटो लेना चाह रहे थे, चाय देना चाह रहे थे, उन्होंने अस्वीकार किया, नहीं फोटो मत लीजिए। सर आपका थैंक यू कि आप इतने दिल से आगे आकर काम करते हैं, जो कि नाम के लिए नहीं, सिर्फ सबके सम्मान के लिए काम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर कनपाल कुमार सर, जो कंटिन्यू हमें बोल रहे थे आप अंदर का संभालो, बाहर का मैं देख लूंगा, जहां प्रॉब्लम हो मुझे बोल दीजिए। एक मैसेज के थ्रू वो अपना काम निरंतर प्रक्रिया से किए हैं, उनका थैंक यू। अभी भी बाहर चाय और बिस्किट के साथ खड़े हैं, तत्पर है अतिथियों के स्वागत के लिए। थैंक यू कनपाल कुमार सर, ईच एंड एवरीथिंग आपने शुरू से लेकर हमें पेन पेपर्स करके आपने हमें नोटिफाई किया था क्या क्या करना है। थैंक यू इस मंच से। थैंक यू चेतन, शुरू से लेकर कल रात भी मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, 11 बजे तक आपने पूरा संलग्न होकर हमें सपोर्ट किया है। ऐसे सपोर्ट आपसे हम आगे भी चाहते हैं, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, इसीलिए पहले से आपको धन्यवाद। श्रीकांत रेड्डी, सिर्फ महिला पखवाड़ा नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी बुलाए, वो डायरेक्ट आ जाते। ओके मैडम, ओके सर, मैं रेडी हूं, ओके। मैं तेलुगु नहीं जानती, जो बोलता है सिर्फ समझती हूं, ओके ही बोला है, और टाइमली आ जाता है। कंटिन्यूअसली सपोर्ट श्रीकांत, विदाउट योर सपोर्ट इट वाज नॉट इम्पॉसिबल। थैंक यू कि अपने पीएचडी के काम के साथ साथ हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, और आपके सुदूर भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू हमारे यस चेतन और श्रीकांत को जो परिचालना करती है, पर्दे के पीछे की भूमिका जिनकी है, के सुजानी मैडम, आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। पहले दिन भी आपने लाइव टेलीकास्ट के लिए मुझे थोड़ा सा बताया, मैडम कर सकते, हम करेंगे कि नहीं, मैंने बोला हम करेंगे। आप विद इन 1 आवर आपने सब कुछ संभाल लिया और आपने किया, स्टार्ट किया, और आज भी आप कंटिन्यू अपने टीम के साथ। यहाँ आप साक्षात उपस्थित नहीं है, लेकिन हम आपको याद करके धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। थैंक यू के सुजानी मैडम, थैंक यू बलि चक्रवर्ती सर फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सच्चिदानंद मूर्ति सर, थैंक यू एवरी डिपार्टमेंट के जितने सारे प्रोफेसर्स हैं, मैडम हैं, सबको धन्यवाद देती हूँ। जब भी जहां भी मिली, वुमेन पखवाड़ा पकोड़ा मिलेगा क्या, ये एक टैगलाइन अभी बन गया। मैडम मुझे लगता है हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे सफल होता है, क्योंकि लोगों के हर एक व्यक्ति
टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब मुझे देखकर बोलते वुमेन पखवाड़ा कब है प्रोग्राम, ओके आ जाएंगे, और वो सब आए हैं। थैंक यू मल्लिका गारू, इतने व्यस्त एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से भी 2-3 कार्यक्रम में आप आई है, थैंक यू। थैंक यू बी मानसा, जो टीम मेंबर भी है हमारी आईसीसी की, और वो पहले दिन भी आई थी, कंटिन्यू मैं जाके डिस्टर्ब करती हूँ इनविटेशन कार्ड के साथ, वो सुन लेते हैं प्यार से, आराम से, और आते हैं। थैंक यू उषा मैडम, अकाउंट सेक्शन आप संभालती है, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप आई, अपने व्यस्ततम समय निकालकर आप आई है। उसके बाद अगर कोई अधिकारी मुझसे छूट गए हैं तो मैं क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू बोलती हूँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सर को, थैंक यू बोलती हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस ऑफिसर को, थैंक यू डिप्टी रजिस्ट्रार सर, थैंक यू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर बिलव्ड स्टूडेंट्स, जिनके बिना आज का ये कार्यक्रम 16 दिन का कार्यक्रम कभी भी कदापि पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू वॉलंटियर्स नगैया हिरेमठ, मणिकंठा, थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट एवरी डे, पेटी बैग उठाने से लेकर प्रोग्राम लास्ट तक उन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, लेकिन आज नहीं आए, इसीलिए इस मंच से धन्यवाद। अगर कोई आप लोग सुन रहे हो इस कार्यक्रम की तरफ से थ्रू आवर लाइव टेलीकास्ट, तो आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके बिना हम अधूरे हैं। एक एक कॉल से एक एक स्टूडेंट, सर मैं बोलना चाहती हूँ, एक स्टूडेंट को कॉल किया, वो 5 को लेकर आए। एक छात्रावास में मैडम को कभी भी फोन किया, मैडम चाहिए, मैडम भेजी है। किसी ने भी अपना क्लास बंक करके कोई नहीं आए, क्लास के बाद ही आए हैं। मेरे सभी स्टूडेंट्स को, जिनको कभी मैं बलपूर्वक भी लाई हूँ, आओ करना है, नहीं तुम लोग छूट नहीं सकते, पार्टिसिपेशन चाहिए। आप सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू इस बिल्डिंग में जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया है, उन सबका थैंक यू ऑल, थैंक यू, लव यू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू। I would conclude by saying this program wouldn't have happened but for these two, Dr. Vaishnavi and Dr. Bulti. At times she said I am Shanta Swabhavi, I am not. I get tensed up very easily, stressed out very easily. They bore with my impatience. They have worked through my stressfulness and they have done all the job. I sat and always asking them, ordering things about. And one more thing, I hate to say it, but I start calling them Papa all the time. In spite of being assistant professors, they have bore with my calling them Papa. And and so they have been they are the backbones. They have done everything. I have not. I don't deserve this. It is they too, along with Tapan Gadai sir and Kumar sir, who deserve that sort of thing. I am not. If this has become successful, I don't even own an iota of what the achievement. It is they, the 4 pillars of this entire program: Vaishnavi, Bulti, Tapan, and then Kumar. Not me. Okay. Thank you very much. Thanks a lot.